mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Presiden Prabowo Subianto dengan lantang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, Benjamin Netanyahu resmi ditetapkan sebagai penjahat perang oleh Mahkamah Pidana Internasional. Amerika Serikat mengancam akan menghancurkan negara manapun yang berani menangkap Netanyahu. Judges at the ICC in The Hague said there were reasonable grounds the three men bore criminal responsibility for atrocities committed during the war between Israel and Hamas. Netanyahu ditetapkan sebagai penjahat perang. Mahkamah Pidana Internasional akhirnya menetapkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang. Penetapan ini muncul sebagai hasil dari tekanan kuat yang diberikan oleh negara-negara pendukung Israel termasuk Indonesia yang terus mendesak agar Israel bertanggung jawab atas tindakannya terhadap rakyat Palestina. Status Netanyahu sebagai buronan internasional kini menjadi sorotan dunia. ICC mengumumkan bahwa Netanyahu akan ditangkap dan diadili oleh lebih dari 124 negara yang sepakat dengan keputusan tersebut. Namun, meski langkah besar ini telah diambil, tantangan besar masih dihadapi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang memiliki hubungan erat dengan Israel telah memperingatkan negara-negara yang berani menahan Netanyahu dengan ancaman keras. Ini menciptakan ketegangan internasional yang semakin memanas, terutama bagi negara-negara yang terus mendukung Palestina dalam perjuangan mereka. Presiden Joe Biden dan pejabat tinggi Amerika Serikat lainnya menyuarakan ancaman serius terhadap negara manapun yang berani menahan Netanyahu atau mengadili Israel. Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan balasan, bahkan dengan ancaman untuk meratakan negara-negara yang mendukung penangkapan Netanyahu. Prabowo Subianto langkah tegas untuk Palestina. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam pidatonya, beliau menyatakan, kita punya prinsip, kita harus solid, kita harus membela rakyat yang tertindas. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan, kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pernyataan ini diwujudkan dengan langkah nyata yang menunjukkan kepemimpinan kuat di level internasional. Indonesia, di bawah arahan Prabowo, telah mengirim tim medis ke Gaza dan bekerja sama dengan negara-negara sahabat untuk membantu korban konflik, termasuk menyediakan fasilitas rumah sakit militer bagi mereka yang membutuhkan. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mempertegas komitmen Indonesia dalam perjuangan untuk kemerdekaan Palestina sesuai dengan pidato tegas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata pun turut mempertegas langkah diplomasi Indonesia dengan berani mendesak negara-negara Arab untuk lebih aktif mendukung Palestina dan memberikan sanksi pada Israel. Kedua pemimpin diplomatik ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian bagi Palestina di kancah internasional. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto dengan gagah berani menyampaikan langsung kepada Presiden Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, agar Amerika Serikat mendukung perdamaian di Palestina. Permintaan ini tidak hanya disampaikan di tingkat bilateral, namun juga di forum internasional G20 di hadapan negara-negara besar yang sebagian besar adalah pendukung kuat Israel. Indonesia supports the global South, and we also urge all countries of the G20 to address the issue of conflict.
in Ukraine and in Gaza. Permintaan ini juga disampaikan melalui forum PBB. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan Indonesia siap berkontribusi penuh dalam upaya perdamaian dunia, termasuk melalui pengiriman pasokan perdamaian jika diperlukan. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip solidaritas dan keadilan, Indonesia tidak hanya menyuarakan dukungan, tetapi juga mengambil langkah nyata di tingkat internasional. Reaksi Palestina terhadap dukungan Indonesia begitu hangat dan penuh rasa terima kasih. Setelah sekian lama menghadapi tekanan internasional, perjuangan Indonesia untuk Palestina mulai menunjukkan hasil yang nyata. Bendera Indonesia kini berkibar dengan hormat di tanah Palestina sebagai simbol solidaritas yang mendalam antara kedua bangsa. Pemerintah Palestina sangat menghargai langkah-langkah konkret yang telah diambil Indonesia, baik dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun dalam diplomasi internasional yang tegas. Banyak pihak di Palestina mengakui bahwa Indonesia, melalui upaya keras Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintah, telah menjadi suara penting dalam perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dan keadilan. Indonesia bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga menunjukkan keteguhan dalam mendesak dunia agar tidak tinggal diam terhadap penderitaan rakyat Palestina. Langkah ini tentu saja memberikan harapan baru bagi mereka yang tengah berjuang untuk kebebasan dan hak-hak mereka yang selama ini terampas. Langkah kontroversial yang diambil oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam menghadapi konflik dengan Palestina tidak hanya mendapat kecaman dari negara-negara dunia, tetapi juga memicu ketidakpuasan di dalam negeri Israel. Keputusan-keputusan yang diambil Netanyahu dianggap semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan memicu kecaman keras dari komunitas internasional. Di sejumlah demonstrasi yang diadakan di Israel, para warga negara Israel yang menentang kebijakan Netanyahu dengan berani mengungkapkan rasa kecewa terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Mereka mendesak Netanyahu untuk memberhentikan kebijakan yang tidak hanya merugikan Palestina, tetapi juga merusak citra Israel di dunia internasional. בנימין נתניהו, אני רוצה לספר לך את סיפורו של מוחמד אבו אל-קומסאן בן 32 מעזה. ניסיתי חודשיים לפני המלחמה ולאחר מכן חווינו את מסע הגירוש. חברת הכנסת גוטליב. עברנו ממקום למקום החל מהצפון ועד שהגענו לדיר אל-בלח. בשבת ה10 באוגוסט נולדו לי תאומים בן ובת אסר ואייסל, וזאת לאחר ניתוח קיסרי קשה שעברה אשתי דוקטור ג'ומאנה ערפי. שמחה מילאה את ליבנו בבואם של ילדינו הראשונים. ההתרגשות הייתה בלתי ניתנת לתיאור. בבוקר יום שלישי ה-13 באוגוסט יצאתי בשמחה לבית החולים. הוצאתי את תעודת הלידה לתינוקות שלי. מתוך שמחה שלחתי לאשתי תמונות ותעודות הלידה בוואטסאפ, אך היא לא ענתה. באותו הזמן קיבלתי שיחה מאחד השכנים ששאל אם אני בסדר. עניתי אני בסדר, והוא אמר לי הדירה שאתה שוכר הופצצה. מיהרתי וליבי פועם מפחד ודאגה לגורל משפחתי עד שהגעתי לדלפק הקבלה של בית החולים, וחלק מהשכנים אמרו לי ברעד הם בתוך מקפיאי המתים. לא עברו 10 דקות מאז הוצאתי תעודת הלידה ופתאום אני מוציא להם תעודות פטירה. התמוטטתי. בעזה יש 17,035 תינוקות שהמערכת שלך הרגה, ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך ואתה בעזות מצח תוהה על כך.
שאתה מואשם בבית הדין בהאג. בנימין נתניהו, חברי הכנסת. מהו החזון שלך? מה חברת החזון הכנסת שלך, גוטליב, תגיד די. לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. של השלום. רד מהדוכן מיד. תן לי להמשיך. רד מהדוכן מיד, להוריד אותו רוצח עכשיו. סדרתי של השלום, מה להוריד אותו הבעיה? עכשיו. מה החזון רוצח שלך? סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי של השלום זה אתה. לא. רד מהדוכן. מה הבעיה? רוצח סדרתי, רד מפה. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menunjukkan dukungan kuat terhadap Palestina melalui langkah-langkah nyata di tingkat internasional, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga diplomasi tegas di forum global. Komitmen ini mendapat apresiasi besar dari Palestina yang melihat Indonesia sebagai suara penting dalam perjuangan mereka. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat kecaman global termasuk dari negara-negara besar dan bahkan dari dalam negeri Israel atas kebijakan yang semakin memperburuk konflik dengan Palestina. Indonesia terus menunjukkan solidaritas tanpa ragu untuk memastikan perdamaian dan keadilan bagi Palestina. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.